Hello. In this video, we are going to discuss a very good question based on the concept of time, speed, and distance. Now, the question is: there are two cities, city A and B. They are in different time zone. A is located 3,000 kilometers east of B. So we have city A, which is located in east of city B, and the distance between A and B is given as 3,000 kilometers. So this distance is 3,000 kilometers, right? The table. Now, the important point is these two cities are in different time zones. ये क्या होता है, क्या इसका इफेक्ट आएगा, दैट विल डिस्कस. The table below describes the schedule of an airplane operating non-stop flight between A and B. All the times indicated are local and on the same day. So when a flight starts from city B at 8 a.m. in the morning, it reaches city A at 3 p.m. So the time taken by flight over here is 7 hours. Fine. And when the flight starts from city A and reaches city B, it takes 4 hours. It starts at 4 p.m. It reaches at 8 p.m. So the time taken is 4 hours. Fine. Now assume that the plane cruises at the same speed in both directions. However, the effective speed is influenced by a steady wind blowing from east to west at 50 km per hour. So we have wind blowing from east to west, and the speed of wind is 50 km per hour. Now see, there are two important factors in this question. First is different time zones, and second is wind. Wind will definitely play a role, and the most important factor is time zone. तो सबसे पहले हम टाइम जोन से कैसे इफेक्ट आ रहा है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, उसको समझते हैं. सपोज देयर टू सिटीज एक्स एंड वाई. फाइन. दे आर इन डिफरेंट टाइम जोन. तो जब सिटी एक्स में द टाइम इज 2 p.m. एट द सेम टाइम सिटी वाई में ड्यू टू टाइम डिफरेंस यहाँ पर जो टाइम शो हो रहा है दैट इज 4 p.m. फाइन. तो वी कैन से दैट सिटी वाई इज 2 hours अहेड ऑफ सिटी एक्स. ठीक है, जब सिटी एक्स में 2 बज रहे हैं तब उसी टाइम एट द सेम टाइम सिटी वाई में 4 o'clock टाइम हो रहा है. नाउ सपोज देयर इज अ फ्लाइट व्हिच टेक्स 5 hours फ्रॉम एक्स टू वाई. in traveling the distance in covering the distance from x to y take 5 hours. तो सिटी x के अकॉर्डिंग तो उस फ्लाइट को कितने बजे पहुंच जाना चाहिए था? 2 में 5 hours सेट करेंगे तो 7 पे, राइट? बट यहां सिटी x का 7 सिटी y का कितने टाइम के इक्विवेलेंट होगा? सिटी y इज 2 hours ahead, तो यहां पर बज रहा होगा 9. फाइन. वहीं पर हम बात करते हैं यदि कोई फ्लाइट सिटी y से स्टार्ट होता है 4 बजे तो उसको लगना चाहिए 5 hours. तो वो पहुंचना चाहिए सिटी एक्स पे 9 बजे. Now this 9 o'clock is time as per city Y, but actual में city X is behind in terms of time ना. तो city X city Y से 2 घंटे पीछे चल रहा है, तो 9 की वजह वो फ्लाइट कितने बजे पहुंच गई होगी? 7 बजे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जिस भी सिटी में टाइम डिफरेंस टाइम आगे चल रहा होगा वहां पर टाइम को फ्लाइट को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगने वाला है. So from here we can conclude that city A is ahead in terms of time. City A में फ्लाइट को पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है. That means city A is ahead in time. So let us assume कि city A is ahead by t hours. जब यहाँ पर city B में 12 o'clock हो रहा है, at the same time city A में कितना हो रहा होगा? 12 plus t o'clock हो रहा होगा. Fine. City A is t hours ahead. ठीक है. अब एक बार डिस्कस करते हैं. जब फ्लाइट ए से बी से ए तक गई, when that flight is traveling from B to A, now speed the wind is flowing in opposite direction, so that will oppose the motion of the flight, right? So suppose the speed of flight is x kilometer per hour. Now see, distance from B to A, distance traveled is 3,000 kilometer, that is constant, right? Speed is x minus 50. Why minus? Because the speed of wind is opposing the motion, right? And the time taken is not 7, but it is equal to 7 minus t. Why minus t? Because city A is t hours ahead in terms of time. तो हमें वो minus t यहाँ पर करना पड़ेगा, right? So from here we can form an equation. Distance is equal to, or distance upon speed is equal to time, and the time is nothing but 7 minus t. Fine. Now when the flight is moving from A to B, now A to B, now this time the speed of wind will add to the motion, right? वो उसको help करेगा motion में. Distance is constant, distance is 3,000 only. Speed is what? X plus 50 this time, क्योंकि जो wind है वो help करेगी flight को, right? And time is not 4 hours,
rather it is 4 plus t hours. Why plus t? देखिए ये यहां से देखे तो 7 बजे पहुंच रही है, पर क्या एक्चुअल में 7 बजे पहुंच रही थी? नहीं, एक्चुअल में वो 9 बजे पहुंच रही थी। तो जो टाइम था वो हमें कितना ऐड करना था? 4 से यदि हम 7 देखें तो 3 आवर्स ही आएगा, जबकि एक्चुअल टाइम कितना आना चाहिए था? 5 आवर्स। हमने अज्यूम किया था 5 आवर्स, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा टाइम में। और ये कितना टाइम ऐड करना पड़ेगा? जो दोनों जोन्स का टाइम डिफरेंस है, ये वो टाइम ऐड हो रहा है। यहाँ पर वो सेम टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा था, right? Again forming the equation, so distance upon speed is time. Now let us do one thing, let us add these two equations. Add करने से क्या होगा? This 7 minus t and plus t will cancel out, right? So let me solve it over here. So this will become 3000 upon x minus 50 plus 3000 over x plus 50, and this 7 minus t plus 4 plus t will be equal to 11 only. T plus t and minus t will cancel out. Fine. On solving this equation, we will get a quadratic equation. I hope you will be able to solve that, so I am not showing that solution part. So this will form an equation: 11x square minus 6000x minus 27500 is equal to 0, which on further solving will get you the value of x as 550. Now x was the speed of the flight. So the speed of flight is 550 km per hour. And when we substitute the value of x in any of the equations, first or second, we'll get 3000 over 550 minus 50 is what? 500. And this is equal to 7 minus t. Now this is nothing but 6. So 6 is equal to 7 minus t. From here t comes out to be 1 hour. Fine. So our first question was, what is the time difference between A and B? So the time difference was of t hours, that is 1 hour. So the answer to the first question is option 4, 1 hour. And what is the place cruising speed in kilometer per hour? The answer is 550 km per hour. So I hope this question is clear to you. Thank you.